Hello friends, welcome to EduTap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 wherein we'll be covering 15 MCQs a day so that आपका जो एग्ज़ाम का प्रैक्टिस है या फिर रिवीजन है वो सही तरह से हो जाए. And one important thing that I would like to highlight here is whatever questions or topics that we'll be doing as part of this series, that would be not only important for you for your APFC exam, okay, EPFO APFC, but also for your EO और AO exam. So दोनों के लिए भी important रहेंगे ये सारे topics. And if we look at the labor laws etc, ये टॉपिक्स टोटल 120 क्वेश्चंस में से क्लोज टू 15 प्लस क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं जो अगेन हाई व्हाट यू विल से हाईली एंटिसिपेटेड टॉपिक्स है जिसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत हाई है एंड एट द सेम टाइम इजी भी है. तो ये जो रिवीजन है, ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, दैट अगेन वुड बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन. एंड 10 मार्क्स और 15 मार्क्स मतलब अगर ये सारे भी करेंगे तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू स्कोर मोर देन 10, एटलीस्ट 10 मार्क्स easily from these topics. So as part of which today we'll be doing Labor Laws Trade Unions Act 1926 part 1. ये दो पार्ट्स में करने वाले हैं हम लोग क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है. So coming to the first question, consider the following statements regarding the formation of the first trade unions in India. If we look at the Trade Unions Act as such, अगर history देखेंगे तो सबसे पहले 19th century में start हुआ था ये ट्रेड यूनियन फॉर्मेशन एंड ऑल दैट. जो स्टार्ट हुआ था एक्चुअली फर्स्ट स्ट्राइक, अगर रिकॉर्डेड स्ट्राइक देखेंगे इंडिया में तो ये फर्स्ट हुआ था 1829 में. ओके, जो अभी बॉम्बे now which is called as Mumbai, वहाँ के वीवर्स ने प्रोटेस्ट किया था because of low wages and harsh working conditions etc. And after that slowly 19th century में जैसे जैसे ट्रेड यूनियंस का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, then it all fell into place. So with this introduction, let us do this question. So the formation of organized trade unions in India began in the early 20th century with a focus on addressing grievances in the steel industry. The Amalgamated Society of Railway Servants of India and Burma, which was founded in 1890, was one of the earliest recognized trade unions in India. The Madras Labour Union, established by B.P. Wadia in 1918, was instrumental in organizing labour in the southern region of India. The Amalgamated Society of Railway Servants primarily represented railway workers in Britain only. See here, first one स्टील इंडस्ट्री का नहीं था एक्चुअली, ये बाकी जो इंडस्ट्रीज, वीवर्स इंडस्ट्री, जो एक्चुअली टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसमें था ये जो ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियंस का सबसे पहले जो हुआ था. एंड आफ्टर दैट इफ वी लुक एट दिस, सो ये फॉल्स हो गया हमारा. ओके, नेक्स्ट आता है द एमलगमेटेड सोसाइटी. यस, ये जो एक्चुअली जो एमलगमेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट्स जो है ये एक्चुअली यूनियन टाइप का है जो ग्रेट ब्रिटेन में हुआ है. तो जहाँ जहाँ ब्रिटेन कंट्रोल्ड रीजन से वहाँ वहाँ उन्होंने ये यूनियन का वो किया था, लॉन्च किया था, मतलब स्टार्ट किया था. सो दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट रिकग्नाइज्ड ट्रेड यूनियंस इन इंडिया, जो इंडिया एंड बर्मा में लॉन्च हुआ था, विच वर अगेन अंडर द ब्रिटिश रूल, वहाँ पे ये हुआ था. सो दिस इज ट्रू. The Madras Labour Union, established by B.P. Wadia in 1918, was instrumental in organizing labour in the southern regions of India. And yes, this is also true. The Amalgamated Society of Railway Servants primarily represented railway workers in Britain only. No, though it was launched or though it has started in Great Britain, but still जहाँ पे भी ब्रिटिश कंट्रोल्ड रीजन से हर जगह पे इनका प्रेजेंस था. सो दिस अगेन इज फॉल्स. सो हियर इन दिस केस 2 and 3 only are true in this case. So coming to the next question, ये बहुत easy है. Now what was the significance of the year 1947 in the context of labor laws and trade unions in India? So अभी हमने देख लिया है कि ट्रेड यूनियंस एक्ट जो है ये 1926 का है, राइट. सो 47 का मेजर इम्पोर्टेंस है इन इंडिया का जो लेबर लॉस या ट्रेड यूनियंस का देखा जाए तो इट इज इंडियाज इंडिपेंडेंस. Along with that, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 भी उसी टाइम पे एनेक्ट किया गया था. सो हियर द करेक्ट आंसर इज सी.
So moving on to our next questions from the same Trade Unions Act. Which of the following statements accurately reflects the concept and relevance of trade unions? किस तरह से trade unions workers के lives में मतलब किस तरह से वो relevant है? So यहाँ पे मैंने 4 options दिया है. Before that मैं आपसे कुछ ट्रेड यूनियंस का जो रेलेवेंस है जो इम्पोर्टेंस है वो डिस्कस करेंगे. अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले आता है नेगोशिएटिंग पावर देता है, क्योंकि एक कलेक्टिव वॉइस रहती है तो इट विल गिव सम बार्गेनिंग पावर टू द एम्प्लॉइज ओके व्हेन दे बार्गेन विद द एम्प्लॉयर्स. एंड इसकी वजह से क्या है, एक तो फेयर वेजेस सही से होंगे, बेनिफिट सही से मिलेंगे एंड वर्किंग कंडीशंस भी मेंटेन रहेंगे. दूसरा हमारा इंपॉर्टेंस है वर्कर प्रोटेक्शन. सो एक अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस या फिर कुछ एक्सप्लॉयटेशन है या कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है एम्प्लॉयज की तरफ, तो वो मतलब कम कर सकते हैं. इट यूनियन किस तरह से इट एक्ट्स एज ए बफर अगेंस्ट ऑल दीज प्रैक्टिसेस. तीसरा है सोशल वेलफेयर. उनके हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन सही से मेंटेन हो रहे कि नहीं, सही टाइम पे रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड ऑल दिस, एक पेड लीव, सही वर्किंग कंडीशंस, ऑल दिस अगेन एक सोशल वेलफेयर वेल बीइंग ऑफ द एम्प्लॉय वो मैनेज करता है और या मेंटेन करता है. कई बार ऐसा होता है कि स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज भी ऑफर करते हैं मैनी यूनियन, सो दैट जो एम्प्लॉयबिलिटी है या जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री का या उस पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट का, वहाँ पे इन एम्प्लॉयज का दिक्कत ना हो एंड वो स्किल्स उनको सही से अपना एम्प्लॉयबिलिटी मैनेज कर सके. पॉलिटिकल एडवोकेसी अगेन, जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज है, लेजिस्लेशन है, कई बार ऐसा होता है कि यूनियंस का इन्फ्लुएंस बहुत रहता है एंड अगेन ये इन्फ्लुएंस की वजह से क्या है, उस तरह के लॉस एडवोकेट करते हैं या पॉलिसीज फ्रेम करते हैं जो अगेन वुड प्रोटेक्ट द वर्कर्स राइट्स इटसेल्फ. दूसरा है हमारा प्रमोटिंग इक्वालिटी. नाउ व्हेन ऑल दीज आर इनटू प्लेस, जहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी हो सकती है, माइनॉरिटी इनइक्वालिटी हो सकती है, वो सब रिड्यूस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज यूनियंस, बिकॉज दे ऑफन एडवोकेट, they say they generally go for gender equality and minority equality. एंड जो एम्प्लॉयर का पावर है उसको काउंटर बैलेंस करता है, मतलब दे विल नेवर ओवरलुक द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स विच जनरली समटाइम्स इट बिकम्स अ टेंडेंसी फॉर द एम्प्लॉयर. तो उसको जो बैलेंस करने का होता है, पावर बैलेंस, वो यूनियंस की वजह से बहुत सही से होता है किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में. कलेक्टिव एक्शन, जहाँ पे भी क्राइसिस है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो डेफिनेटली दीज यूनियंस विल ट्राई टू नेगेट दैट. वहाँ पे कई फॉर एग्जांपल ले ऑफ्स हो रहे हैं या फिर कुछ वर्कर्स इंटरेस्ट पे फोकस नहीं हो रहा है, उस सिचुएशन में यूनियंस दे जनरली वॉइस, दे बिकम वॉइस फॉर दोज हु आर बीइंग सप्रेस्ड. ग्लोबलाइजेशन के एरा में जहाँ पे ट्रेड यूनियंस इंडिविजुअल के ज़्यादा ट्रेड यूनियंस ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है इन वर्कर्स को, वेयर इन टू मेंटेन देयर राइट्स, या फिर लेबर मार्केट की सिचुएशन किस तरह से है और इनको किस तरह से उसके लिए तैयार रहना है इन ऑल दैट केसेस. सो दीज आर द सम ऑफ द व्हाट यू कैन से दैट relevance or importance of trade unions. So with this you might have understood that second point, third point and fourth point they fit well under the relevance of this. first one नहीं, वो सिर्फ negotiating wages या benefits के लिए नहीं, बाकी कई सारे चीज़ों में भी वो कर रहे हैं. जैसे कि यहाँ देखा हमने their collective voice for workers, trade unions influence employment conditions, वहाँ के किस तरह के conditions है. कई बार training and educational opportunities भी उनको देते हैं as part of which they want to support their workers. So here comes the next question. Which of the following statements about the Montagu-Chelmsford reforms of 1919 is or are correct? Now when we look at the Trade Unions Act of 1926, ये ऐसा एक लेजिस्लेशन है जो मेजरली देखता है कि फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द ट्रेड यूनियंस एंड हाउ ऑल इट ऑल स्टार्टेड. सी जब ब्रिटिशर्स हमें रूल कर रहे थे उस टाइम पे बहुत ही
व्हाट यूल से बहुत ही हार्श कंडीशंस थे लेबर्स के लिए, लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग, लो वेजेस, मिनिमम जॉब सिक्योरिटी, ऐसे कई सारे दिक्कतें थी। तो स्लोली स्लोली जितना ठीक है, जितना उन्होंने आई मीन बेयर किया है वो किया है, उसके बाद दे स्टार्टेड अपोजिंग, दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग। ओके, सो स्लोली उस तरह के लेबर मूवमेंट्स 19th लास्ट ऑफ द 19th सेंचुरी में स्टार्ट होके धीरे धीरे 20th सेंचुरी में भी होने लगा था। नाउ एंड आफ्टर दैट वर्ल्ड वॉर वन आया था। अब वर्ल्ड वॉर वन में क्या है, जो डिमांड, लेबर का डिमांड बहुत बढ़ गया, बट एट द सेम टाइम जो जिस तरह के कंडीशंस थे उस तरह के कंडीशंस में वो करने के लिए तैयार नहीं थे, बिकॉज ऑफ विच अगेन दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट ऑल दिस। सो विद दिस द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन दे फेल्ट दैट ओके, कुछ रेगुलेशन होना चाहिए लेबर रिलेशंस में एंड देन लेबर लॉस में, so that they can prevent and resolve whatever disputes that have been arising between the workers and the employers, as a part of which the Montagu-Chelmsford reforms 1919 they have been introduced। and उसमें क्या है, major they have allowed here these reforms, majorly they focused on the and allowing Indian provinces to legislate on labor matters as a provincial subject। so ये provinces को responsibility दे दिया है, ठीक है, लेबर मैटर्स का, सो दैट इससे क्या हुआ, वॉट एवर द प्रॉब्लम्स और लेबर लेजिस्लेशन है या legislating or governing trade unions, it all fell into the hands of the provinces। so ये true है इस केस में। and these reforms of 1919 created a separate portfolio for labor in the central government। no, they have actually in fact given it to provinces। अभी तो states है, उस time provinces थे, तो central government के hand में कुछ नहीं था, they have decentralized in fact and given, so this is not true, so this is false। the reforms marked the beginning of the transfer of certain powers to Indian provinces, but labor legislation was not one of those areas, so this is also false। the same thing, but see how कितने अलग अलग तरीके से present किया है। The Montagu-Chelmsford reforms also expanded the legislative powers of the provinces in all subject matters except labor, which remained a central subject। Actually वो provinces को दे दिया गया है, again same statement but presented in a different form। so इस question में आप देखोगे तो second, third, fourth point almost similar है but completely presented in a different manner। okay, so the correct answer is 1। so here only 1 is part of the statements associated with Montagu-Chelmsford reforms of 1919। actually this is the one that paved the way for Royal Commission on Labour, for establishment of Royal Commission on Labour, that paved the way for the Trade Unions Act and all that। so coming to the next question, what is the primary objective of the Trade Unions Act 1926? now this is majorly, क्यों ट्रेड यूनियंस एक्ट किस लिए लॉन्च किया गया था या फिर किस लिए एस्टेब्लिश किया गया था? दिस इज मेजरली टू प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड डिफाइन द लॉ रिलेटेड टू रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस। लाइक उनका एक रिकॉग्निशन मिलेगा, मतलब ये ट्रेड यूनियन है, and with that representation or with that recognition they'll be able to negotiate okay with the employers on behalf of all the employees। एक legal status मिला है जिसकी वजह से वो खुद थोड़ा property भी maintain कर सकती है या फिर कुछ problem हुआ है तो वो in the court of law, that is there also they can represent। so legal status मिल गया उनको, protection of rights, उस लीगल प्रोटेक्शन की वजह से जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करना, एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करना, वो सब करना हो गया था। डिस्प्यूट सेटलमेंट्स, रेगुलेशन ऑफ फंड्स, डेमोक्रेटिक प्रमोशन, जैसे कि वहाँ कुछ इलेक्शंस हो रहे हैं, फॉर दैट जो भी फंड्स मैनेज करना है, किस तरह से इलेक्शंस करना है ओपनली, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एंड ऑल दैट दे वर एबल टू डू बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड यूनियंस एक्ट। स्ट्रेंथनिंग ऑफ बार्गेनिंग पावर ऑफ द एम्प्लॉयज विद द एम्प्लॉयर्स इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। सो उससे क्या है, जो उनका बेसिक राइट्स है, वर्कर्स राइट्स है, दैट दे वर एबल टू प्रोटेक्ट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, जो भी वो कर रहे हैं ये एक एक्ट के अंदर आ रहा है तो एक
ऊपर से एक पर्व्यू है उनके ऊपर, so because of which they were able to ensure the accountability of the trade unions that were formed. Along with that कुछ disputes है तो peaceful resolution and all that also they were able to do under this particular act. So coming to the next question, which of the following statements accurately reflects the key definitions under section 2 of the Trade Unions Act 1926? उसमें कुछ definitions है, वो अभी एक बार हम लोग देख लेंगे क्या क्या है. Office bearer. Office bearer is in a trade union refers to any executive member but does not include an auditor. Yes, as per the act, any office bearer ट्रेड यूनियन का कोई एग्जीक्यूटिव मेंबर ही होगा, दैट इज मेन जो हेड है और द एग्जीक्यूटिव मेंबर, बट डज नॉट इंक्लूड द ऑडिटर. दिस इज ट्रू. A trade dispute includes conflicts between employers and employees, workmen, or even between employers themselves, as long as the issue is related to employment or working conditions, and this is also very much true as per this act. Workman refers exclusively to employees working under the employer with whom the trade dispute arises. कभी कभी directly भी नहीं, indirectly भी अगर employed है, even then in such cases that particular person with whom the trade dispute has arisen can be considered as workman in this case. Okay, so ये false है. A trade union can only be a permanent combination and cannot be temporary. ये गलत है, कभी कभी temporary भी हो सकता है, and is solely for regulating employer-employee relations. ये बिल्कुल contradictory है when it comes to the second point, right? So it is not only for regulating employer-employee relations but also employee-employee and sometimes employer-employee relations as well. So this is also false. So in this case only 1 and 2 are true, that is A is the correct answer. And एक और चीज भी आपको यहाँ पे इस particular section में याद रखना पड़ेगा या फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि this law does not apply to agreements between business partners or employer-employee agreements or agreements related to the sale of goodwill of a business or some instruction by the professionals और सम ट्रेड और हैंडक्राफ्ट्स, बट जो मेन ट्रेड यूनियन है उन्हीं के लिए ये एप्लीकेबल रहेगा, नॉट फॉर एनी नॉर्मल एग्रीमेंट्स बिटवीन द business partners, employers or some other agreements related to the business. So coming to the next question, under the Trade Unions Act 1926, what is the hierarchical relationship between the registrar of trade unions and the additional or deputy registrars appointed by the appropriate government? Now when it comes to the registrar of trade unions, for each state the appropriate government will appoint them. सो सेंट्रल गवर्नमेंट जो अगर ऑयल फील्ड्स है, माइंस है, डिफेंस है, उन सब केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस. इन ऑल अदर केसेस द स्टेट गवर्नमेंट विल बी अपॉइंटिंग द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस. ओके, thereby they should be able to look into the under the supervision of all these act, how it is being implemented and all that. Okay, now along with this sometimes registrar को जहाँ पे state बड़ा है, मतलब it's not that कि हर state में ऐसे ही होगा, but in some cases the appropriate government can also appoint officials like additional and deputy registrars so that they can assist the registrar in cases where the states are huge. Okay, and all these will again act, the additional and deputy registrars actually they work under the registrar or under they act under the supervision of the registrar, and whatever the duties that have been given to them, they will be doing that in defined local limits, that is in that particular state. state में भी अगर कुछ defined local limits है, especially for each of these additional or the deputy registrar, they'll work accordingly. Okay, so ये one of the sections है under the Trade Unions Act. So with this information, based on the hierarchical relationship कैसे होगा, the registrar has supervisory powers over additional or deputy registrars who can perform specific duties only within defined local limits. So here in this case C is the correct answer. Here comes the next question. Which of the following statements accurately describes the process of registration under Section 4 of the Trade Unions Act 1926?
नाउ जब भी यूनियन फॉर्म करना होगा सो दे हैव टू अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन, उनको रजिस्टर करना पड़ेगा यूनियन को with this registrar, right? Now, as part of which a minimum of 7 members are required to apply for the registration of trade union by subscribing their names to the rules of the union. As per the rules, as per the prescribed format, they have to apply. And yes, a minimum of 7 members are required to start the union. So this is true. If members withdraw from the union after applying for registration but before the registration is completed, the application does not become invalid even if the number of members falls below 7. अप्लाई कर दिया है उन्होंने, बट इवन बिफोर अप्लाइंग वो जो 7 मेंबर्स का थ्रेशोल्ड है उससे कम हो गया है. फॉर एग्जांपल 10 मेंबर्स मिलके किए हैं विद ऑल द फॉर्मेलिटीज, रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, बट रजिस्ट्रेशन होने से पहले ही, दैट इज एप्लीकेशन जो अप्लाई तो कर लिया लेकिन रजिस्ट्रेशन होने से पहले अगर ये 6 मेंबर्स तक हो गया है, नाउ दिस विल नॉट बी वैलिड, ये वैलिड नहीं रहेगा. सो दिस इज फॉल्स. द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्स कंप्लायंस विद द रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स एज आउटलाइंड अंडर द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 which must be adhered to all it must be adhered to by all the applicants. And this is true because all the members of the union should follow or should comply with the rules and regulations that are formed under the Trade Unions Act 1926. So this is very much true. If a trade union has fewer than 7 members at the time of application, it cannot be registered under the Trade Unions Act. That's true. अगर 7 members से कम ही है तो वो कहाँ से अप्लाई कर पाएंगे, right? So this cannot happen. So this is also true. So in this case, the correct answer is 1, 3 and 4. So D is the correct answer in this case. So coming to the next question, under section 5 of the Trade Unions Act 1926, which of the following is not a mandatory requirement for a trade union applying for registration? क्योंकि जैसे हमने पहले ही बोला था इन द अर्लियर क्वेश्चन कि रजिस्ट्रार को वो सबमिट करना पड़ेगा, राइट? क्या क्या उसमें इन्वॉल्व रहेगा? सी व्हेन इट कम्स टू द एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन, अ कॉपी ऑफ द यूनियन रूल्स वो सबमिट करना पड़ेगा. यूनियन रूल्स क्या क्या है? Provision of a list of members including their names, occupations and addresses. Yes, this also has to be provided. And the name of the trade union and its head office address वो भी उनको submit करना पड़ेगा. As submission of the trade union's financial statements for the last 3 years irrespective of its age. Now this is not true. Why? Because only if a trade union has been formed for more than a year, 1 साल से ऊपर वो बन गया है, एंड 1 साल के बाद वो अगर रजिस्टर कर रहे हैं, इन दैट केस उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब उनके एसेट्स लायबिलिटीज के डिटेल्स रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ेगा. अगर 1 साल के अंदर ही है, लेस देन 1 ईयर ऑफ एज ही हुआ है उस यूनियन को फॉर्म करके, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उनको कोई डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज नॉट ट्रू. Disclosure of the names, ages, addresses and occupations of the office bearers of the union. Obviously this is very much required. So it is 1, 2 and 4 that is required. Not mandatory means only 3. So 3 only here is the answer. That is C is the correct answer here. So here comes the next question. Under section 6 of the Trade Unions Act 1926, which of the following is not a mandatory provision required to be included in the rules of a trade union for eligibility for registration? इससे पहले हमने देखा है क्या क्या उनको सबमिट करना पड़ेगा एज पार्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन. सो इन दिस केस क्या क्या प्रोविजंस एज पार्ट ऑफ द रूल्स ऑफ द ट्रेड यूनियन वो नहीं कर सकते, वो यहाँ पे दिया है. 1, द यूनियंस नेम एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्वियसली यूनियन का कुछ एक नेम होता है एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मतलब क्यों उन्होंने वो यूनियन स्टार्ट किया है, दैट ऑल दे हैव टू मेंशन इट एक्सप्लिसिटली इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन द रूल्स. A process for appointing and removing union executives. Obviously जो rules उन्होंने किया है, one of that would be this only. Next, the minimum subscription amount required from members
इट शुड नॉट बी लेस देन 25 पैसे पर मंथ, उतना तो हर मेंबर को देना पड़ेगा, 25 पैसे से कम नहीं रख सकते सब्सक्रिप्शन फी फॉर द यूनियन। सो ये भी ट्रू है, मतलब मैंडेटरी है। The procedure for dissolving the trade union is not required, but yes, here in this case the rules says that the procedure for dissolving the trade union is very much required as part of the rules that have been set up by the union while getting itself registered. So this is not true. So in this case not mandatory, but it is mandatory. So in this case 4 is the correct answer. So coming to the next question, under section 10 of the Trade Union Act 1926, which of the following is a valid ground for the cancellation or withdrawal of a trade union's registration by the registrar? जैसे अगर registration जो certificate है of registration for trade union, that can be withdrawn or cancelled by the registrar under some circumstances. So उसी नंबर ऑफ सर्कमस्टांसेस जो भी है उसमें मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है. नाउ यू हैव टू टेल मी विच ऑफ दिस इज ए वैलिड ग्राउंड फॉर द सेम. 1. द ट्रेड यूनियन अप्लाइज फॉर कैंसिलेशन एंड कंप्लाइज विद द प्रिस्क्राइब्ड वेरिफिकेशन. ऑब्वियसली अगर उन्होंने खुद कैंसिल करना चाहा तो ऑब्वियसली दैट वुड बी ए वैलिड ग्राउंड. सो दिस इज ट्रू. द यूनियन नो लॉन्गर एग्जिस्ट और वायलेट्स द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट्स और रेसेंट्स एनी रिक्वायर्ड रूल. सो ये भी ट्रू है, बिकॉज अगर वो है ही नहीं एंड इफ इट इज वायलेटिंग ऑब्वियसली दैट बिकम्स वन ऑफ द रीजंस फॉर कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन. सो दिस इज ट्रू. The union does not accept ordinary members engaged in the relevant industry. If we look at section 6, okay, section 6 of the Trade Unions Act 1926, उसमें कई सारे रूल्स दिए गए हैं. अगर किसी यूनियन को रजिस्ट्रेशन अपना रखना है या मेंटेन करना है, उनको क्या क्या रूल्स फॉलो करना है. ठीक है, अगर इफ दे आर नॉट फॉलोइंग एनी ऑफ दोज रूल्स, देन the certificate of registration of the trade union can be withdrawn or cancelled by the registrar. So one of those rules that are applicable under section section 6 is the union has to accept ordinary members engaged in the relevant industry. अगर ये follow नहीं कर रहे हैं and if there is a complaint that can be raised, obviously their registration can be cancelled. So this is also true. The certificate was obtained through fraud or error. Obviously error से भी है, fraud से भी, जो भी हो, अगर मिला है तो definitely there is a scope for cancellation by the registrar. So this is also true. So here all of these above are the valid grounds for cancellation or withdrawal of the trade union's registration by the registrar. So coming to the next question, according to section 11 of the Trade Unions Act 1926, which of the following statements regarding the appeal process against the registrar's decision is not correct? चलो रजिस्ट्रार का जो डिसीजन हुआ है कि इनका विड्रॉल या कैंसिल ऑफ द सर्टिफिकेट जो भी हुआ है, इफ दे आर नॉट हैप्पी विद दैट, yes they can appeal, okay, later. Now how they have to appeal? If the trade union's head office is located in a presidency town, the appeal must be filed in the high court. Like your मुंबई हो गया, क्योंकि उस टाइम तो प्रेसिडेंसी इसी बोलते थे, राइट? अभी तो मेट्रोज या सिटीज टाउन्स उस तरह से हैं, लाइक योर मद्रास, लाइक ना चेन्नई, मुंबई, बॉम्बे, कोलकाता, उस टाइम का कैलकाटा, सूरत. सो इस तरह के टाउन्स में अगर है तो then they can file it in directly in the high court. Okay, yes, this statement is true. If the head office is located outside a presidency town, the appeal must be filed in a court appointed by the appropriate government. जो भी लेबर कोर्ट हो या जो भी है, वॉट एवर दैट एट द टाइम जो उस स्टेट के हिसाब से जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा उसके हिसाब से उनको करना पड़ेगा. एंड यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. The appellate court can either uphold the registrar's decision, वो बोल सकते हैं कि registrar's decision correct है, or order the registrar to register the union or reinstate the certificate. जो भी है as per the appeal they can say, either उनको support कर सकते हैं या फिर उनके against में भी जा सकता है. And obviously एक कोई सूट फाइल होता है, जैसे एक सिविल सूट होता है, ये भी उसी तरह से करते हैं. So अगर होता है तो obviously either way they have to go. So either they'll be supporting the registrar or not. So that is true.
If the appeal is dismissed, the aggravated party can directly appeal to the Supreme Court. No, अगर appellate court नहीं कर रहा है तो maximum they can go to High Court only, but not to the Supreme Court as per the Acts section 11, under which appeals can be done. So here in this case it is 4 only which is not correct as part of the section 11 of the Trade Unions Act 1926. So coming to the next question, मैं यहाँ पे एक statement दूंगी. अभी मुझे आपको वो statement के basis पे आपको बताना पड़ेगा which of the options that have been provided is correct. So in this case the statement itself is, this is the statement जो यहाँ पे दिया है. Okay, what is the statement? In case of a change in the registered office address of a trade union, the registrar must be informed within 30 days and the change will be effective only after the registrar's approval. Now, which one of the following is correct regarding the statement that I have provided here? What does the first option says? The statement is correct and is in accordance with the provisions of the Trade Unions Act 1926. B क्या बोल रहा है? The statement is partially correct, but the time limit for informing the registrar is 14 days and not 30 days. Third one क्या बोल रहा है option? The statement is incorrect as a change in registered office address becomes effective immediately after informing the registrar without requiring any approval. Fourth क्या बोल रहा है? The statement is incorrect as a trade union must publish the change in the registered address in the official gazette. Okay, so in this case the statement is correct. No, the statement is not correct. Why? Because whatever the change, the address change is happening related to the trade union, that must be informed to the registrar within 14 days of writing, and the new address must be updated in the register maintained at the registrar's office. So B is the correct answer in this case. 30 days में 14 days का होना चाहिए, not 30 days, and बाकी statements they are wrong. So as per the statements, B option is the correct answer. Now as per the section 14 of the Trade Unions Act 1926, one or more of these following statements are not correct. Let us see what are they. Registered trade unions are exempt from the provisions of the Societies Registration Act 1860. Registered trade unions are exempt from the Cooperative Societies Act 1912. Registered trade unions are exempt from the Companies Act 1956. Any registration of a trade union under the Societies Registration Act 1860 or the Cooperative Societies Act 1912 is considered valid. So in this case, in fact, registered trade unions are exempted from the few acts. Those include the Societies Registration Act 1860, the Cooperative Societies Act 1912, and the Companies Act 1956. So these three are the correct statements. This is not, obviously it is contradicting the two of the above statements. So it is 4 only that is not correct as per the section 14 of the Trade Unions Act 1926. So here comes the last question for this session, which says which of the following is not a permissible use of general funds of the registered trade union under section 15 of the Trade Unions Act 1926. So जो funds है वो जनरल फंड्स जो है, मतलब जो मंथली वो कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, उससे पहले कुछ फंड्स ऑलरेडी है, कुछ फंड्स आए हैं, ऑल दैट दे कैन मेंटेन द जनरल फंड्स, राइट. सो उन जनरल फंड से किस तरह से वो यूज़ कर सकते हैं, एंड विच इज़ नॉट परमिसिबल एंड विच इज़ परमिसिबल. जैसे कि सैलरीज हो गए, अलावेंसेस हो गए, एक्सपेंसेस हो गए टू द ऑफिस बेयरर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन, दे हैव टू गेट इट फ्रॉम दिस इटसेल्फ. कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हुए, ऑडिटिंग फीस एक्सेट्रा, दैट ऑल्सो दे हैव टू पे फ्रॉम दिस. लीगल प्रोसीडिंग्स, ट्रेड डिस्प्यूट्स का जो खर्चे हैं वो भी इसी में से आएंगे. कंपेंसेटिंग द मेंबर्स फॉर लॉसेस ड्यू टू ट्रेड डिस्प्यूट्स, वो भी इसी में से पे कर सकते हैं. प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू द members like death, old age, sickness, accident, unemployment allowance, or sometimes even insurance
okay, insurance ka benefits, all that they will be covering from this general funds only. Along with that kuch educational, social or religious benefits hai, that also they can pay from these benefits only, including funeral expenses. Now wo kitna, see, when it comes to the contributing to such causes that benefits the workers, it should not exceed 1/4 combined total of the gross income of that particular trade union. ओके, सो इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल उस पर्टिकुलर ईयर में ट्रेड यूनियन का जो अमाउंट एक्रूड हुआ है, जो भी ग्रॉस इनकम है, वो 100 रुपीज से, एग्जाम्पल में बता रही हूँ, उसमें से सिर्फ 25 रुपीज ही दे कैन प्रोवाइड इट और कॉन्ट्रीब्यूट टू द कॉज दैट बेनिफिट्स द वर्कर्स, क्योंकि इनके ऑब्जेक्टिव्स कई सारे हैं, वन ऑफ दोज ऑब्जेक्टिव्स इज बेनिफिटिंग द वर्कर्स, सो उसके लिए वो 25% ही यूज कर सकते ऑफ द टोटल ऑफ देयर टोटल कंबाइंड जो भी टोटल ग्रॉस इनकम है फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर. ओके, so with this data or with this content, which of the following is not a permissible use of general funds? First, paying salaries, allowances and expenses to office bearers, ये तो है ही, so this is true, it is permissible. Contributing to causes benefiting workers not exceeding 1/4 of the combined total of the gross income accrued to the general funds in that particular year, उस ईयर में जितना भी accrued होगा gross income, उसमें सिर्फ 25% ही वो पे कर सकते towards the causes that is benefiting the workers. So this is also true, so it is permissible. Offering educational, social or religious benefits for members or their dependents, this is also permissible. Providing travel expenses for personal tours of the family members of the office members, this office bearers, this is not permissible. So B, that is in this case 2. This is the correct answer. सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया है, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए एपीएफसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे और यूजफुल रहेंगे, एंड ऑल्सो फॉर ईओ और एओ फॉर द अपकमिंग 2025 एग्जामिनेशन. सो इसके अलावा आपको अगर कुछ और कोर्सेज के बारे में, अगर कुछ कोर्सेज का हेल्प चाहिए, तो डेफिनेटली करेंटली एट EduTap वी आर ऑफरिंग 3 kinds of courses for 3 different sets of students who are preparing for these examinations. First है मास्टर कोर्स, जिसमें आपको सब कुछ, I mean सारे सब्जेक्ट्स का जो कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ PDFs, वीडियोस, चैप्टर क्विजेस एंड इवन वीकली मेंटरशिप, मतलब हर वीक कुलदीप सर आपसे ऑन I mean क्लास लेंगे, एंड देन ही विल गाइड यू ऑन हाउ टू यूटिलाइज द कंटेंट प्रॉपरली एज पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. एट द सेम टाइम आपको जो भी डाउट्स है वो सब क्लैरिफाई करेंगे. वन थिंग, सो कंप्लीट 1 स्टॉप सॉल्यूशन है ये. उसके बाद आता है, ये उनके लिए है जो नॉविस है, मतलब अभी नया नया अपना प्रिपरेशन शुरू किया है एंड दे रिक्वायर सम हेल्पिंग हैंड. टेस्ट सीरीज प्लस, इसमें कुछ टॉपिक जैसे ऐसे होते, कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिकली आपको चाहिए कि मुझे कंटेंट चाहिए या फिर हेल्प चाहिए, वो मिलेगा अलोंग विथ टेस्ट. ये उनके लिए है जो ऑलरेडी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिए हैं एंड स्टिल दे आर फॉल्टरिंग समवेयर इन केस ऑफ फ्यू सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स, उनके लिए ये बहुत हेल्प रहने वाला है. एंड थर्ड है एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज, जिनका प्रिपरेशन ऑलरेडी अच्छे से हो गया है बट स्टिल दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वेयर दे स्टैंड इन देयर प्रिपरेशन. सो एग्जाम रेलेवेंट, बिल्कुल एग्जाम की तरह ही आपको फील मिलेगा एंड यू विल गेट द टेस्ट सीरीज वेयर इन यू कैन प्रैक्टिस वेरियस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट are asked in this UPSC EPFO APFC and EO और AO examination. So ये 3 तरह के कोर्सेज है जो करेंटली अभी अवेलेबल है एन EduTap. अगर आपको कुछ डाउट है और जानकारी चाहिए तो ऑब्वियसली यू कैन reach out to any of our representatives and get the information. Accordingly you can make an informed decision. Thank you very much friends कि आपने बहुत अपने पेशेंटली यहाँ तक देखा है. Thanks a lot and hope you like this session and all the best.